Hello friends, welcome to this Facebook live session. I Dr. Niradhar De, faculty member School of Education, Indira Gandhi National Open University, welcome you all to this Facebook live session. Friends, today we are going to discuss one of the very important topic of your research course, that is in MA Education program of Indira Gandhi National Open University. You have one course in the first year of your program, that is MES 011 Educational Research. The course title is Educational Research. And further in the second year, you are supposed to do a dissertation. Okay, you have a course of dissertation, a practical oriented course. You have to do a type of project in this course. The course code is MESP 001 and course title is dissertation. So today's topic, research methodology part 3, that is specially on the experimental research method we will discuss, and this topic is included in these two courses of MA Education program of IGNOU, that is MESP 001 dissertation and the second course, that is MES 011 Educational Research. So once again, I welcome all our learners to this Facebook live session. So beforehand, let me to say, today we are discussing the third session specially in research methodology. We have already discussed in my first session, I have discussed about the descriptive research, descriptive studies, and in the second session I have discussed the philosophical research as well as historical research, how as a researcher how you can conduct your study by using philosophical method and historical method. And further today we are going to discuss another important method, that is the experimental research. So before starting our discussion today, let me to say that in the dissertation course you are supposed to prepare a research proposal. Then after you have to submit that research proposal at your concerned regional center of IGNOU, in under which regional center you have enrolled. Then the regional center will evaluate your synopsis, your research proposal by our external evaluators, our experts, and then after you will get a type of approval letter. Okay, so after getting the approval letter, then further you have to pursue your dissertation. You have to implement the proposal that you have prepared. Then you have to conduct a research. Then after completion of your research, you have to prepare a research report. That's called as the dissertation report. And again you have to submit that dissertation report at your concerned regional center. Okay, and the regional center will evaluate your dissertation report and also take the vivavas by our approved evaluators or approved experts. So friends, I have taken many sessions in my YouTube channel. At the same time, in the special group, that is IGNOU MA Education Learners Group, that is in School of Education, I have discussed almost all the components of a research. That means how you will conduct the research, what processes you are supposed to follow. So at present we are in the research methodology stage. So let us go forward to discuss today's topic. So first of all, let me to say that two important documents I have said in my earlier session, that two important documents that we have developed. One is your theoretical course, that is MES 016. The course title is Educational Research, and the second that is Handbook on Dissertation Work. For pursuing your course MESP 001 dissertation, we have developed a handbook on dissertation work, and I am sure that you must have gone through these two documents. You might have received the hard copy of these courses. At the same time, you can also access the soft copy of it in the e-Gyan course portal
of Indira Gandhi National Open University. So friends, you will find a detailed guidelines that how you will conduct your study. First of all, you will get a theoretical understanding, theoretical construct about conducting an educational research from this course, that is from MES 016, and practically how you will do the dissertation work, the guidelines you will get from the handbook. Okay, तो हम कोशिश करेंगे दोनों लैंग्वेज में हम बात करेंगे, क्योंकि जो एक ग्रुप ऑफ लर्नर्स जो हमारा है वो डिसर्टेशन प्रपोजल भी हिंदी में लिखते हैं और डिसर्टेशन रिपोर्ट भी वो हिंदी में सबमिट करते हैं. ठीक है, मैं कोशिश करूंगा दोनों लैंग्वेज का जो लर्नर्स है वो इस सेशन का फायदा ले. So friends, let us go forward to discuss that what are the major important discussion points today that we are going to discuss. First of all, concept of experimental research. We will discuss about what is the concept of an experimental research. Then further we will discuss that what steps and processes that we follow or that we'll use for conducting experimental research. And further we will discuss different types of experimental design so far as the nature of your problem, research problem is concerned. Okay, what type of experimental design that you're supposed to use. So friends, let us go forward to discuss about the components. Just to reiterate, just to recapitulate that what we have discussed in our earlier session, that these are the components that you're supposed to follow for conducting your dissertation work, for conducting your research in education. First of all, selecting a research problem. You have to select a problem, okay, from your interest area, you can say, and the courses that you have studied in the first and second year of your MA education program. At the same time, you can also select a problem from other educational areas. Okay. Then next you have to do a type of review of related literature, the studies that have been earlier conducted in the topic or in the problem that you have selected. You have to understand, you have to analyze that what has been done earlier and what has not been done yet, and what are the new things that you're supposed to do in your study. Okay, so what are the research gap, then further how you will fill that research gap. Then you have to state the research question. As a researcher, you might have certain questions in your mind, so that's why you have to state the research questions, and further you will try to get the answer of this research question. शोध प्रश्न आप एक शोध करता होने के नाते आपके मन में जरूर शोध प्रश्न कुछ होगा, और आप कोशिश करेंगे कि यह जो प्रश्न है रिसर्च करके उसका जो प्रोसेस अडॉप्ट करके, मेथड्स, प्रॉपर रिसर्च मेथड अडॉप्ट करके, ठीक है, बाय यूजिंग ए प्रॉपर प्रोसेस एंड प्रोसीजर, you will try to get the answer of the research question. Then on the basis of the research question, further what you have to do, you have to state the objectives, you have to write the objectives. As research is a very systematic and scientific work, so that's why you have to state the research objectives. Then on the basis of the objectives that you have stated, again you have to state the hypothesis, परिकल्पना. ठीक है, तो परिकल्पना जरूरी नहीं है कि हर प्रकार स्टडी में परिकल्पना आप रचना करें. ठीक है, यदि आपका स्टडी का जो नेचर है, यदि परिकल्पना के लिए स्कोप है, इफ इट इज ए टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी, इफ यू वांट टू establish or want to study a type of correlation or a type of difference between two groups or correlations between two variables, then better you have to prove it statistically, so that's why you have to state the hypothesis. And if it is a new study, if you are not getting any idea about the study, that the result will go in what direction, no studies have been conducted earlier, and you want to just explore the findings, the result of the study. Okay, so you can say if the study is a type of explorative type of study, then without stating a hypothesis you can also conduct your study. Then further operational definitions of the terms used in the title, the new terms, the new terminologies that you have used, new concepts that you have used. So further what you have to do, you have to explain it.
Then delimitation of the study. In operational definition, functionally you have to define it that how the new terms, new concepts will be used in your study. Okay? Then further delimitation of your study. So mostly you can say that the study is a study is general in nature, vast in nature. But what you have to do, being a researcher, you have to delimit the study from vastness to a researchable form. Okay? So that's why in terms of area, in terms of population, you can delimit your study. आपका स्टडी को आप सीमांकन करेंगे. ठीक है? एक लार्ज समस्या से, एक लार्ज एरिया से छोटे एरिया तक उसे सीमांकन करके आप आएंगे, उसे सीमांकित आप करेंगे, सो दैट आप एक सीमित समय में कैसे वह अध्ययन आप कर सके. देन फर्दर the next step is most important, that is research methodology. So what are the research methodology, research process, research design that you supposed to follow for conducting the study? Okay, so that you have to mention here. Particular research method, then the sample, population, tools used for data collection, and statistical techniques that you supposed to use for analyzing the data. That you have to explain. Further we will discuss. And our today's session is part of the research methodology. Then data analysis and interpretation. The data that you will get, you have to analyze it. Then further you have to interpret it to get the result. Then findings, result and discussion. After interpretation, you will get the findings. Then you have to discuss the result that you will get. Okay? On the basis of the analysis of review of related literature. Review of related literature जो आपको मिला था, उससे पहले आप एनालिसिस किए हो, जो गैप स्टडी आपने किया था, ठीक है, जो गैप आप स्टडी किया था, जो रिजल्ट आपको मिला, whether your result fill that gap or not. So you have to discuss the result. So that's why discussion of the result is one of the important step, one of the important section of your dissertation work. And then after references, means the entire sources that you have used for collecting the data, at the same time for getting the resources, getting review of related literature. It may be the book, it may be the encyclopedia, it may be the journal, it may be the project, different reports, it may be dissertation, it may be PhD thesis. So you have to prepare a detailed reference section for that. Okay, so these are the important components. यही सब इसका component है, step है एक रिसर्च करने के लिए. पर जब प्रपोजल आप बनाएंगे, फाइंडिंग्स रिजल्ट एंड डिस्कशन ये नहीं रहेगा, क्योंकि रिसर्च करने के बाद इसका काम शुरू होता है. ठीक है, तो दैट्स व्हाई डाटा एनालिसिस, द प्रोसेस ऑफ डाटा एनालिसिस यू कैन मेंशन. देन आफ्टर इन द रिसर्च प्रपोजल you have to mention the implication of your study. Further, when you prepare the dissertation report, the entire component will be involved. So friends, चलिए आगे बढ़ते हैं. आज का हमारा जो टॉपिक है वो रिसर्च मेथोडोलॉजी से लिया गया है. So let me to say that research methodology includes the population and sample, tools and techniques for data collection. I have already taken in 2 different sessions. Okay, this is available in my Facebook, in the IGNOU ऑफिशियल फेसबुक पेज में भी आपको मिल जाएगा. और आपका जो ग्रुप है, ठीक है, इग्नू एमए एजुकेशन लर्नर्स ग्रुप है, इस ग्रुप में भी इसका जो वीडियो रिकॉर्डिंग है, फेसबुक लाइव सेशन का वीडियो रिकॉर्डिंग है, दैट ऑल्सो यू विल गेट. देन फर्दर मेथड्स ऑफ द स्टडी और द डिजाइन, जो आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं. फॉर द स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज्ड फॉर डाटा एनालिसिस I have not discussed. I will try to take one session further. Methods of the study. Here you see I have already said that in educational research mostly we use 4 types of method: philosophical research, descriptive research, experimental research and historical research. I have already discussed historical research, descriptive research and philosophical research, and today I am going to discuss this experimental research. And friends, you know, experimental research means today you are doing the experimental research, but the aim of the purpose of conducting experimental research is always futuristic in nature. That means the findings and the result that you will get, that will be implemented in future. ठीक है, future में इसे हम implement करेंगे in different situations. ठीक है, so that's why
इट स्टडी द फ्यूचर, ठीक है, इसे हम आगे जाकर भविष्य में इसे कैसे हम यूज करें, सो दैट वी विल गेट ए टाइप ऑफ यू कैन से रिजल्ट, ए टाइप ऑफ फाइंडिंग्स, ठीक है. सो नाउ लेट अस डिस्कस द मेजर कंसर्न ऑफ एन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. जब एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हम करते हैं, हमारा मेजर कंसर्न क्या रहता है, मेजर एम, मेजर पर्पस क्या रहता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, यू सी, experimental research is based upon the positivist paradigm. So friends, there are two paradigm of conducting research. One is the, you can say, positivist paradigm, and other is the humanist paradigm. ठीक है. Positivist paradigm, it says about the data which is in terms of numbers. ठीक है. जो डाटा है कुछ नंबर्स में मिलेगा, कुछ फ्रीक्वेंसीज में मिलेगा. फर्दर स्टैटिस्टिक्स यूज करके वो डाटा को हम एनालिसिस करेंगे, ओके, बाय यूजिंग टी टेस्ट, बाय यूजिंग अनोवा, बाय यूजिंग काई स्क्वायर टेस्ट, और बाय यूजिंग कोरिलेशन और मेनी अदर स्टैटिस्टिक्स, ठीक है. बट द रिसर्च व्हिच इज बेस्ड अपॉन ए ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, दैट इज मोस्टली क्वालिटेटिव इन नेचर, दैट इज नॉट क्वांटिटेटिव इन नेचर. A minimum quantitative approach may be taken, but mostly humanistic approach of study. When we talk about the paradigm, then we can say that deals with the processes of doing the things, how things happens. So you have to interview, you have to observe the things, then accordingly you have to analyze. But here experimental research is based upon the positivist paradigm. Okay, then experimental research is mostly conducted in physical science. So friends, mostly we conduct experimental research in physical science, but in education we also do experimental research, because education brings concepts or practices the theories, practices the principles and laws, practices the concepts from other disciplines. You can say it may be from science discipline, it may be from social science, it may be from language, it may be from literature and other studies also. Okay, so that's why friends, we can say that the concept of experimental research, though it is highly used in the physical sciences, in science-based subjects, but equally we also use experimental research in education, in educational research, right? Further, based upon, I have already said that the data that you will get in experimental research, that is mostly quantitative in nature. We will get the data in numbers, in terms. ठीक है, ये डाटा हमें एक नंबर में मिलेगा. ठीक है, फर्दर हम उसे स्टैटिस्टिक्स यूज करके एनालिसिस करेंगे, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी. ठीक है, देन परसेंटाइल एंड परसेंटाइल रैंक, देन फर्दर वी कैन से correlation, t-test, ANOVA, ANCOVA, then chi-square test, sign test, median test, so many statistics you can use. Then I have already said that the result of the experimental research directs to the future implications. Means today, the study that we are doing, its implication is towards the future. Okay, means in future, how the result will be implemented in different situations upon different groups, right? And this is a type of applied research, because after conducting the study, we have to apply the findings of our experimental research in different situations. Next, let us go forward to understand the popular terms and symbols used in experimental research. Experimental research में जो कुछ टर्म यूज हम करते हैं, कुछ सिंबल्स यूज करते हैं जो कि कुछ टेक्निकल इन नेचर. सो फ्रेंड्स, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को समझने के लिए ये जो टर्म मैंने यहाँ मेंशन किया, एक्सपेरिमेंटर, सब्जेक्ट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, कंट्रोल ग्रुप, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट, यू शुड अंडरस्टैंड all these terms, all these concepts. Experimenter means the person who is conducting the study. Let you are the researcher. You have selected experimental method for conducting your study. You are pursuing the study, so you are the experimenter. Then further subject means experimenter, you can say. जिनके ऊपर ये अध्ययन आप करेंगे, the subject, the sample and the population.
ये स्टूडेंट हो सकते हैं या और कुछ ग्रुप हो सकते हैं जिसके ऊपर आप ये प्रयोगात्मक विधि व्यवहार करेंगे, ये एक्सपेरिमेंट जिनके ऊपर आप करेंगे. Then independent variable, you see the experimental method, this is you can say this is a communication between independent variable and dependent variable. This is a picture of two variable, independent variable and dependent variable. Dependent variable depends upon the independent variable. Okay, we have to study the effect of the independent variable, the impact of the independent variable upon the dependent variable. ठीक है, आगे हम डिस्कशन करेंगे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है. जैसे कि मैं कहूं अचीवमेंट जो है ये डिपेंड करता है मेथड्स के ऊपर. इफ यू हैव टेकन ए न्यू मेथड to teach the learner, just like to teach the learners by using MOOCs, massive open online courses, by using open educational resources, by using the blended technology. ठीक है, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम में ब्लेंडेड टेक्नोलॉजी आप यूज करके यदि एक ग्रुप को आप पढ़ाएंगे, आप देखेंगे उनका अचीवमेंट कैसे हो रहा है. ठीक है, इफ यू वांट टू नो द इफेक्ट ऑफ ब्लेंडेड टेक्नोलॉजी, OER, MOOCs और एनी अदर न्यू मेथड्स. ठीक है, तो मेथड्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और जो अचीवमेंट आपको मिलेगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया. इट मींस अचीवमेंट डिपेंड्स अपॉन द परफॉर्मेंस, डिपेंड्स अपॉन द मेथड. सो दैट्स व्हाई ये जो वेरिएबल है इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, यू शुड वेरी मच बीइंग एन एक्सपेरिमेंटर, you should very much understand about that what are the independent variable in your study and what are the dependent variable. Then further, control group and experimental group. For conducting a type of experimental study, you supposed to form two groups. One is called as the control group and other is called as experimental group. दो ग्रुप आपको चयन करना पड़ेगा, फॉर्म करना पड़ेगा. एक ग्रुप को नाम हम कंट्रोल ग्रुप देंगे और अदर ग्रुप का नाम हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप देंगे. ठीक है, कंट्रोल ग्रुप क्यों देंगे, एक्सपेरिमेंटल क्यों देंगे, हम आगे डिस्कशन करेंगे. कंट्रोल ग्रुप का एक ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, डे टू डे ट्रीटमेंट दिया जाएगा जो हम करते आ रहे हैं, और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को न्यू ट्रीटमेंट दिया जाएगा. वी हैव टू टीच देम बाय यूजिंग एन इनोवेटिव मेथड. ठीक है, देन प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट, दो प्रकार का टेस्टिंग जो कि ऑब्जर्वेशन जिसको कहते हैं. यू हैव टू डू द ऑब्जर्वेशन, यू हैव टू डू द टेस्टिंग. टू टाइप्स ऑफ टेस्टिंग यू हैव टू डू, वन इज द प्री टेस्ट एंड अदर इज द पोस्ट टेस्ट. प्री टेस्ट मीन्स बिफोर कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट. ठीक है, यू हैव टू टेक ए प्री टेस्ट to know the level of performance of the learners, to know the equivalence of the groups. Then further, after implementing, after giving the treatment, then further you have to know the changes that has happened within that group. ठीक है, it may be जो achievement का level है ये बढ़ा है या कम हुआ है, तो वो जानने के लिए कि पोस्ट टेस्ट करेंगे और दोबारा एक टेस्ट हम करेंगे, तो that's called as the post test. So friends, you should understand all these terminologies for understanding experimental research in a better way. Let us go forward to understand about the characteristics of experimental research, that what are the different characteristics are there in an experimental research. First of all, you see there are four characteristics. One is control, then manipulation, then observation and replication. So try to understand what is control, what is manipulation, what is observation and what is replication. चलिए समझने के लिए कोशिश करते हैं. Control means in experimental research we study the effect of an independent variable on a dependent variable. So when we want to know the impact or the effect or the effectiveness of independent variable on dependent variable, बहुत सारे independent variable होगा, बहुत सारे एक्सट्रानियस वेरिएबल होगा जो कि आपका जो एक्सपेरिमेंट है, इन बिटवीन द एक्सपेरिमेंट वो बाधा डालेंगे, दे विल अफेक्ट योर स्टडी. ठीक है, सो दैट्स व्हाई व्हाट यू हैव टू डू बीइंग ए रिसर्चर, यू हैव टू कंट्रोल द इररिलेवेंट फैक्टर्स और द इररिलेवेंट वेरिएबल्स, दैट्स कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल. जो स्टडी आप कर रहे हैं जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो ठीक है, उससे छोड़ के बाकी जो सब एक्सट्रानियस वेरिएबल है, इररिलेवेंट फैक्टर्स है, इररिलेवेंट वेरिएबल है, उसे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा. कैसे कंट्रोल करेंगे बाद में हम डिस्कशन करेंगे. सो दैट्स व्हाई अनलेस यू कंट्रोल द अदर वेरिएबल्स देन यू कैन नॉट से दैट
you cannot study the exact impact, the exact effect. Just like here you see different factors, just like I have taken one example here to study the effect of intelligence on academic achievement of 9th grade students. आप यदि इंटेलिजेंस का एकेडमिक अचीवमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट है ये जानना चाहते हैं, क्या आप कह सकते हैं ओनली इंटेलिजेंस एक ही फैक्टर है जो अचीवमेंट के लिए दायी है और अचीवमेंट के लिए काम करता है? नो, यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट मेनी अदर फैक्टर जस्ट लाइक स्टडी हैबिट्स, curriculum, practices, the personal practices of the learners, then the learning environment and the facilities, the support that we provide to the learners, then attitude and attitude of the learners. We cannot reject all these factors, all these variables. So that's why, friends, to know the exact impact of intelligence upon academic achievement, you have to control the other variables. So that's why to study the effect of programmed instruction in teaching algebra between the two groups of subjects. So what you have to do apart from the programmed instruction, the other extraneous variables that you have to control. So that's why control is one of the important characteristics for conducting an experimental research. Then further methods of control. चलिए कंट्रोल हम कैसे करते हैं? सो प्लीज समझने के लिए कोशिश करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि हम कंट्रोल कैसे करें. फर्स्ट ऑफ ऑल रैंडम असाइनमेंट ऑफ सब्जेक्ट्स टू द ग्रुप्स. ठीक है, एक ग्रुप में जो सब्जेक्ट रहेंगे, सब्जेक्ट मीन्स हियर जिनके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे. ठीक है, तो उनका सिलेक्शन हम कैसे करें? हम रैंडम असाइनमेंट करेंगे. हम दो ग्रुप किए हैं, कंट्रोल ग्रुप किए हैं, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप किए हैं. हमारा कोशिश रहेगा कि दोनों ग्रुप बिल्कुल बराबर रहे. तो दोनों ग्रुप बराबर कैसे होगा? पहले रैंडमली ग्रुप हमने सिलेक्ट करेंगे, देन आफ्टर दोनों उसी ग्रुप से सब्जेक्ट को लेकर बराबर दो ग्रुप हम करेंगे. बराबर दो ग्रुप करने के लिए बहुत टेक्निक है जो कि हमें करना पड़ेगा. आफ्टर द रैंडमाइजेशन फॉर सिलेक्टिंग ए ब्रॉड ग्रुप, देन यू हैव टू मैचिंग सब्जेक्ट्स विथ रैंडम असाइनमेंट्स. देन आप क्या करेंगे? जो रैंडम सिलेक्ट आपने किया है, ठीक है, टेस्ट करके आपने किया है, तो जो इक्वल स्कोर रखे हैं, जिनके एबिलिटीज इक्वल टाइप की है, इक्वल नेचर की है, तो आप क्या करेंगे? उनको रैंडमली एक को कंट्रोल ग्रुप में रखेंगे और एक को एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में रखेंगे. तो इसी प्रकार दो इक्वल ग्रुप आप फ्रेम करेंगे. देन मैचिंग मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. जो दो ग्रुप आपने फॉर्म किया, आपका कोशिश भी ये रहना चाहिए दोनों ग्रुप सो फार एज देयर मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज कंसर्न, ये इक्वल रहे, उनका डेविएशन इक्वल रहे, एट द सेम टाइम उनका मीन स्कोर इक्वल रहे. जब तक हम दोनों इक्विवेलेंट ग्रुप और पैरेलल ग्रुप बना नहीं पाएंगे तब तक इफेक्ट स्टडी हम नहीं कर पाएंगे. ठीक है, यदि एक ग्रुप वीक रहा, एक ग्रुप सुपरियर रहा, तो जो ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं हो सकता है वीक ग्रुप मतलब सुपरियर ग्रुप से ट्रीटमेंट लेने के बाद परफॉर्मेंस अच्छा करे. ठीक है, देयर इज द चांसेस बिकॉज we did certain error in selecting the groups, in forming the groups. So that's why friends, try to understand, you have to do the careful matching and you have to calculate the mean and standard deviation and it should be more or less than. exact तो कभी नहीं मिलेगा, पर कोशिश होनी चाहिए कि बहुत क्लोज मीन हो, दोनों मीन एंड दोनों स्टैंडर्ड डेविएशन. देन रैंकिंग ऑफ सब्जेक्ट्स ऑन द मैचिंग वेरिएबल. जो मैचिंग वेरिएबल आप किए हैं उसका आप रैंकिंग कर सकते हैं. रैंकिंग 1 2 3, 1 को एक ग्रुप में दे रहे तो 2 को दूसरा ग्रुप, फिर 3 को 1 ग्रुप में, 4 को दूसरा ग्रुप में. तो इसी प्रकार एक पैरेलल ग्रुप, आप रिलायबिलिटी यदि पढ़े होंगे उसमें आप पैरेलल फॉर्म मेथड पढ़े होंगे. ठीक है, इक्विवेलेंस फॉर्म मेथड पढ़े होंगे. एक टेस्ट को हाउ यू कैन स्प्लिट इनटू 2 इक्वल हाफ्स. ठीक है, तो उसी प्रकार दो ग्रुप आपको बनाना पड़ेगा एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर होमोजीनियस सिलेक्शन लाइक एज, सेक्स, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड. एज ग्रुप सेम रहेगा, जेंडर सेम रहेगा एंड सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑल्सो, बिकॉज दैट ऑल्सो समहाउ अफेक्ट आवर रिजल्ट. सो दीज आर द मेथड्स ऑफ कंट्रोल. Then further manipulation. So here manipulation means
In the process of experimentation, manipulation is possible by the researcher on the independent variable. You have to manipulate the independent variable. Okay, without manipulating the independent variable, you cannot conduct this study. So manipulation in implementing methods, traditional and new method, two methods you have to use. इसका कॉमन एग्जाम्पल इस प्रकार है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जस्ट लाइक जेंडर, एज, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, मेथड्स ऑफ टीचिंग, क्लासरूम एनवायरनमेंट, पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स एटसेट्रा. तो you can manipulate, because I have already said that many factors are there that can be responsible for the product. You may not study the exact effect of the independent variable. So that's why, being a researcher, you can also do the manipulation. Then further observation. Observation means here the pre-test and the post-test. Means the experiment that you conducted to know how far there is the effect, you have to take the test. So that's why the dependent variable of the achievement is measured through a test or the observation. So you have to prepare a test that may be standardized also, and the same test will be used for both the groups, for the control group as well as for the experimental group. I am not spending much of time in observation. Let us go forward to discuss about replication. So many times, because research always a subjective work, though in experimental studies we believe that the result that you will get, it will a type of objective result, but many a time you can't make it guarantee. Okay, so that's why, to know the real effect, the real impact of the independent variable upon the dependent variable, what you can do, you can just do a type of replication. So replication means many sub experiments you can do, not only one experiment. Many parallel experiments you can also conduct. Means a pair of experiments you are conducting at the same time, conducting parallelly, so that आप देखेंगे दो ग्रुप, पहले दो ग्रुप किया है आप, one is the control and other is the experimental group, and again you have also prepared another two groups, that is also one control and one experimental group, and same treatment, same experiment, same process you are adopting in replication for the second group. And you can also correlate, you can also compare the result of the first experiment and the second experiment to just verify the result, just know whether there is the validity, there is the reliability of the results that you are getting. So you can also do careful replications. Now let us, after discussing the concept of experimental research, now let us discuss the experimental design. So what are the different experimental design that we can use for conducting study? कौन सा experimental design हमने व्यवहार करेंगे एजुकेशनल स्टडीज के लिए, हम अभी डिस्कशन करेंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं. So friends, here you see types of experimental design. The selection of a particular design depends upon the nature and purpose of the experiment. आपका एक्सपेरिमेंट का क्या नेचर है, आपका एक्सपेरिमेंट का पर्पस क्या है, एम क्या है, ये देखना पड़ेगा बिफोर सिलेक्टिंग द पर्टिकुलर डिजाइन. मेनी डिजाइन आर देयर. ठीक है. टाइप्स ऑफ वेरिएबल. सो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल यू हैव टेकन इन योर स्टडी. ठीक है, कौन सा वेरिएबल आप सिलेक्ट किए हैं, कौन सा चर आप लिए हैं आपके स्टडी के लिए. देन नेचर ऑफ द डाटा, व्हाट टाइप ऑफ डाटा यू विल गेट. देन सिचुएशंस एंड कंडीशंस फॉर कैरिंग आउट द एक्सपेरिमेंट एंड ऑल्सो the competence of the experimenter. So being experimenter, whether you are competent or not, whether you are able to use a particular research design or not, because further it will use, it will demand for using a statistical technique to find out the result. So that's why it based upon the nature of the problem, the purpose of your study, at the same time the nature of the variable, and also being a researcher, your competence to handle that design. So friends, now let us go forward to discuss the specific design. So here you see types of experimental design. We can use 5 types of experimental design for conducting educational study by using the experimental method. First is the pre-experimental design, we will discuss further. Then true experimental design, then quasi-experimental design,
then time series design, then factorial design. So friends, it is not possible to discuss all the design, all the 5 designs in one session. So today I will try to discuss pre-experimental design, true experimental design, and quasi-experimental design. And definitely I will say the concept, I will discuss the concept about time series and factorial design. So friends, let us go forward to discuss pre-experimental design क्या है. चलिए हम कोशिश करते हैं समझने के लिए. यदि आप प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन लिया है आपके एक्सपेरिमेंटल स्टडी में, आप कैसे करेंगे. Here you see pre-experimental design is again 2 types. There are 2 types of pre-experimental design. So here you see pre-experimental design is a type of lower grade design, you can say lower level design, has very little or no control of extraneous or situational variable. Extraneous variable के ऊपर इसका कुछ control नहीं रहता. And still we use it, but the result that we will get by using the pre-experimental design, उसके ऊपर क्वेश्चन उठ सकता है. ठीक है, एक ट्रू रिजल्ट आपको ना मिले. So there are 2 types of pre-experimental design, that is 1 group pre-test post-test design and 2 group static design. ठीक है, 1 group pre-test post-test design and 2 group static design. So we'll try to understand ये दोनों डिजाइन जो है ये क्या है, 1 group pre-test post-test डिजाइन क्या है and 2 group static डिजाइन क्या है. चलिए आगे बढ़ते हैं. Here you see 1 group pre-test post-test design. This is design number 1. So here is the conditions, how you will conduct it, and here how you will use it. So condition is group will be 1, as this is 1 group, the term that has been used, that is 1 group. So that's why group will be 1. Then group formation, how you can form, how you can form the groups. You see, you can do a type of randomization, but here there is no scope of doing any type of randomization. So here form the same standard but without a proper randomization. ठीक है. Then independent variable क्या होगा. Let हमने लिया है इफेक्ट ऑफ MOOCs, मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस. तो जो MOOCs कोर्स हमने डेवलप करते हैं, ऑनलाइन कोर्स डेवलप करते हैं, we just want to study the effect of MOOCs का इफेक्ट लर्निंग के ऊपर कैसे होता है, स्टूडेंट्स के अचीवमेंट के ऊपर कैसे होता है, यदि हम जानना चाहते हैं. ठीक है. सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल विल बी द MOOCs, इफेक्ट ऑफ MOOCs. देन डिपेंडेंट वेरिएबल विल अचीवमेंट टेस्ट कोर्स. ठीक है. सो व्हाट यू विल डू, विल टेक ओनली 1 ग्रुप. ठीक है, यहाँ कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का कोई कंसेप्ट नहीं है. ओनली 1 ग्रुप मीन्स यू कैन से दैट इज द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप. उसी ग्रुप के ऊपर आप MOOCs में उनको एक लेसन या एक चैप्टर उनको आप पढ़ाएंगे, एक कोर्स उनको आप पढ़ाएंगे. देन आफ्टर व्हाट यू विल डू, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर टीचिंग ऑफ योर ट्रीटमेंट, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक ए टेस्ट. सो अचीवमेंट टेस्ट आप उनका लेंगे. सो हियर यू सी प्री टेस्ट मीन्स एंड पोस्ट टेस्ट मीन्स, ये जो दोनों है प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट, बिफोर द एक्सपेरिमेंट एक टेस्ट आपने करेंगे, उनका अचीवमेंट लेवल पहले आप देखेंगे. देन आफ्टर यू इंप्लीमेंट दिस MOOCs में उनको आप पढ़ाओगे, ट्रीटमेंट दोगे. देन दोबारा ट्रीटमेंट जब खत्म हो जाता है, पोस्ट टेस्ट आप लोगे. देन आफ्टर व्हाट यू हैव टू डू, कंपेयर द प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट रिजल्ट. प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट रिजल्ट को आप कंपेयर करेंगे. ठीक है. एंड यदि आप पोस्ट टेस्ट रिजल्ट यदि ज्यादा आया, सिग्निफिकेंट डिफरेंस यदि ज्यादा मिला, यू कैन यूज द टी टेस्ट और अनोवा हियर. देन यू कैन टी टेस्ट आप यूज कर सकते हैं. देन यू कैन से दैट देयर इज द इफेक्ट, देयर इज द इंपैक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दैट मीन्स द MOOCs अपॉन द अचीवमेंट ऑफ द लर्नर्स. बट हियर देयर इज द थ्रेट, यहाँ कुछ बाधाएं हैं. ठीक है. जस्ट लाइक नो कंट्रोल ग्रुप, यहां तो कंट्रोल ग्रुप है ही नहीं है, एक ही ग्रुप के ऊपर आपने कर लिया. नो रैंडमाइजेशन, सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के लिए, ग्रुप फॉर्म करने के लिए कोई रैंडमाइजेशन आपने नहीं किया. सेम टेस्ट फॉर बोथ द कंडीशंस, दोनों कंडीशन के लिए सेम टेस्ट यूज किए, 2 पैरेलल टेस्ट आपने यूज किया. ठीक है. इट्स डिफिकल्ट टू प्रिपेयर टू पैरेलल टेस्ट ऑल्सो, मे बी सेम टेस्ट और पैरेलल टेस्ट, सेम टेस्ट है तो कैरी ओवर इफेक्ट रहेगा. ठीक है. पैरेलल टेस्ट है तो थोड़ा सा कैरी ओवर इफेक्ट रहेगा, एंड इट इज डिफिकल्ट टू प्रिपेयर ए पैरेलल टेस्ट ऑल्सो. देन हिस्ट्री एंड मैच्योरेशन इज नॉट कंट्रोल, मीन्स विद इन
जब एक्सट्रानियस वेरिएबल को आप कंट्रोल कर नहीं पा रहे हैं, सिचुएशनल वेरिएबल को आप कंट्रोल कर नहीं पा रहे हैं, मींस ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट क्या क्या सिचुएशन क्रिएट हो रहा है जो अफेक्ट कर रहा है सब्जेक्ट की माइंड को, वो आप कंट्रोल नहीं किए हैं. सो दैट्स व्हाई जो रिजल्ट आपको मिला है हिस्ट्री एंड मैच्योरेशन रिलेटेड कंट्रोल आपका बिल्कुल नहीं है. जो रिजल्ट आपको मिला आप कहेंगे वो रिजल्ट इतना इफेक्टिव नहीं होगा, रिलायबल नहीं होगा. बट वी कंडक्ट ए टाइप ऑफ one group pre-test post-test design, but your suggestion is it's a lower order of design. This is not a higher order of design. चलिए नेक्स्ट सेकेंड डिजाइन हम डिस्कशन करते हैं अंडर द दैट इज डिजाइन टू ग्रुप स्टैटिक डिजाइन. हियर कंडीशंस आर जस्ट लाइक ग्रुप विल 2. In earlier cases, group was 1, but here group will be 2. So that means one will be the experimental group and other will be the control group. Then how you will do the group formation? Two equivalent groups you have to form. In terms of their age, दोनों ग्रुप का एज लेवल सेम होगा, स्टैंडर्ड सेम होगा, जिस क्लास में पढ़ते हैं वो भी सेम होगा, without a proper randomization. But here also you are not going to do any type of randomization. ठीक है, without a randomization you are just forming the groups. So you are just giving a space for the error here for forming the groups. Then here independent variable, that you can say variable 1, that means teaching through MOOCs. ठीक है, MOOCs यूज करके आप पढ़ाएंगे किसको, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को. वन विल बी द कंट्रोल एंड अदर विल बी द एक्सपेरिमेंटल. एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का आप नया ट्रीटमेंट देंगे जो कि MOOCs, आप जानना चाहते हैं द इफेक्ट्स ऑफ द MOOCs. सो दैट्स व्हाई MOOCs यूज करके आप किसको पढ़ाओगे, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को. एंड फॉर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2, दैट इज टीचिंग थ्रू कन्वेंशनल मेथड, जो लेक्चर मेथड है या ट्रेडिशनल मेथड जो आप पढ़ाते हैं, वो कंट्रोल ग्रुप को पढ़ाएंगे. टॉपिक विल बी सेम, subject will be same, age group will be same, standard will be same, number of learners will be same, everything will be same, but methods will be different. Control group को traditional method and experimental group को आप MOOCs जो नया मेथड है उसमें आप पढ़ाएंगे. डिपेंडेंट वेरिएबल अचीवमेंट टेस्ट स्कोर्स. ठीक है, ये दोनों का अचीवमेंट आप देखेंगे, ऑब्जर्वेशंस ये दोनों का देखेंगे, स्कोर दोनों का देखेंगे आफ्टर गिविंग द ट्रीटमेंट, आफ्टर टीचिंग, आफ्टर प्रोवाइडिंग द ट्रीटमेंट. ठीक है, चाहे MOOCs हो या कन्वेंशनल मेथड में हो. देन पोस्ट टेस्ट, इधर आप देखिए स्टैटिक डिजाइन में आप पोस्ट प्री टेस्ट नहीं कर रहे हैं. पोस्ट टेस्ट मीन्स कोर्स एंड मीन्स कोर्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप. यहां सिर्फ पोस्ट टेस्ट आप लेंगे. दोनों ग्रुप आपका फॉर्म हो गया, कंट्रोल एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप. एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को MOOCs में पढ़ाया, कंट्रोल ग्रुप को ट्रेडिशनल मेथड में पढ़ाया. देन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर टीचिंग, देन फर्दर व्हाट यू हैव टू डू, you have to employ, you have to use a post test, or you have to compare the result, the scores of the post test of two groups. ठीक है, then you can say that which group did better. यदि इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1, दैट मीन्स एक्सपेरिमेंटल ग्रुप यदि अच्छा किया, जिनको आप MOOCs यूज करके पढ़ाया, देन आप कह सकते हैं देयर इज द इफेक्ट ऑफ MOOCs. बट स्टिल देन देयर इज द थ्रेट, मीन्स आप रैंडमाइजेशन यहाँ किया ही नहीं, ग्रुप फॉर्मेशन आपका ठीक नहीं है, बायस सिलेक्शन में अफेक्ट पोस्ट टेस्ट स्कोर. जब ग्रुप सिलेक्शन ठीक से आप नहीं किया, जो इफेक्ट आपको मिल रहा है, जो डिफरेंस आपको मिल रहा है, आप कैसे कह सकते हैं that difference is because of the MOOCs. So that's why यहाँ जो एरर है, जो त्रुटियां हैं, जो गलतियां आपने किया ग्रुप फॉर्मेशन में किया. So that's why प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में ये जो दो डिजाइन का बात हमने किया, 1 ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट एंड 2 ग्रुप स्टैटिक डिजाइन, these 2 experimental designs are not error free. यहाँ सब्जेक्टिविटी आ सकता है, यहाँ चांसेस है एरर करने का. सो दैट्स व्हाई सजेशंस में कहा गया है ए बेटर डिजाइन देन अर्लियर बट स्टिल वीक डिजाइन. डेफिनेटली एक बेटर डिजाइन है इन कंपैरिजन टू द फर्स्ट डिजाइन, क्योंकि यहाँ 2 ग्रुप हमने लिया, बट स्टिल देन दिस इज वीक एक्सपेरिमेंटल डिजाइन. सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेट अस ट्राई टू डिस्कस द ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन. ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन क्या है? ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन इज हाईली यूज्ड इन एजुकेशनल रिसर्च. हम इसे करते हैं, ज्यादातर करते हैं, इट्स वेरी पॉपुलर. ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन ब्रिंग्स कंट्रोल इन टर्म्स ऑफ रैंडमाइजेशन
मैचिंग, हिस्ट्री, मैचुरेशन, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड टेस्टिंग, ये पूरा कंट्रोल करता है किसके किसके ऊपर? इन टर्म्स ऑफ रैंडमाइजेशन, ग्रुप सिलेक्शन रैंडमाइजेशन करके करता है, मैचिंग करके करता है, देन मैचिंग भी करता है, एक एक करके सब्जेक्ट को मैच करता है, दो को मैच किया, एक को एक ग्रुप में कंट्रोल में और एक को एक्सपेरिमेंटल में, ताकि दोनों इक्वल एंड पैरेलल ग्रुप हो। हिस्ट्री तो रिसर्चर का बिल्कुल कंप्लीट नजर रहता है, कंप्लीट कंट्रोल रहता है इन बिटवीन द प्रोसेस, इन बिटवीन द एंटायर प्रोसेस ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, किसी प्रकार का हिस्ट्री, किसी प्रकार का इंटरवेंशन ना हो, किसी प्रकार का एक्सट्रेनियस वेरिएबल आकर अफेक्ट ना करे सब्जेक्ट को, इंडिपेंडेंटली फ्री होकर सब्जेक्ट अपना काम करे, बाहर से किसी भी फैक्टर आकर उनको अफेक्ट ना करे, दैट्स कॉल्ड एज द हिस्ट्री। देन मैचुरेशन, मैचुरेशन तो जितने दिन हम करेंगे कंट्रोल ग्रुप को ट्रीटमेंट करेंगे, उतने ही दिन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को ट्रीटमेंट करेंगे। यहां स्कोप नहीं रहेगा किसी एज फैक्टर, किसी मैचुरेशन फैक्टर, ये कुछ स्कोप नहीं रहेगा, क्योंकि दोनों बराबर ट्रीटमेंट हम देंगे, टाइम इंटरवल इसका सेम रहेगा, एक का ज्यादा एक का कम, ऐसे कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई मैचुरेशन इफेक्ट जो है इसमें वो मिनिमाइज होगा। देन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, उसे स्टैंडर्डाइज्ड हमने करेंगे, जो टेस्ट हमने यूज करेंगे, ठीक है। सो दैट्स व्हाई फ्रेंड्स, ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन इज द पॉपुलर डिजाइन and this is a type of error-free design, you can say. Then here in true experimental design, we can use 4 different types of true experimental design. One is two groups randomized subjects post-test only design, two groups randomized subjects post-test only design. आगे हम डिस्कशन करेंगे. Then two groups randomized matched subjects post-test only design. Then third is randomized groups pre-test post-test design. Then fourth is द रैंडमाइज्ड सोलोमन 3 ग्रुप डिजाइन। आप देखिए ये सभी में रैंडमाइज्ड वर्ड यूज हुआ है, मतलब हम रैंडमाइज्ड करेंगे, ठीक है। यह सिर्फ पोस्ट टेस्ट ओनली, बट हियर यू सी यहां भी पोस्ट टेस्ट ओनली, बट थर्ड को जो हम आते हैं प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट, फोर्थ को जो आते हैं ये 3 ग्रुप्स डिजाइन, ठीक है। यह 3 ग्रुप होगा। कैसे 3 ग्रुप होगा हम देखेंगे। सो फ्रेंड्स, the design that you will select, it should be based upon your objectives, it should be based upon your problem. आपका प्रॉब्लम यदि फर्स्ट डिजाइन से, फर्स्ट ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन से हो जा रहा है, सिलेक्ट दिस वन। यदि नहीं हो रहा है तो थर्ड वाला आप लीजिए, रैंडमाइज्ड ग्रुप्स प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन, ठीक है। सो इट इज एज पर द नेचर एंड स्कोप ऑफ योर रिसर्च एंड स्कोप ऑफ योर रिसर्च प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझने के लिए कोशिश करते हैं कि ये जो 4 डिजाइन है इसका कंडीशंस और यूजेस सब कैसे रहेगा। चलिए, नाउ डिजाइन नंबर 3, दिस इज 2 ग्रुप्स रैंडमाइज सब्जेक्ट्स पोस्ट टेस्ट ओनली डिजाइन। इधर देखिए ग्रुप 2 हो गया एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल, ग्रुप फॉर्मेशन रैंडमाइजेशन करके ग्रुप फॉर्मेशन आपने किया, मैंने बताया रैंडमाइजेशन कैसे करोगे। देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 हो गया, 1 इज मूक्स, जो एग्जांपल लिए तो वही अभी भी लेंगे। देन सेकेंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अगेन द कन्वेंशनल मेथड, एक टॉपिक हमने सिलेक्ट करेंगे, एक यूनिट या चैप्टर, एक पोर्शन ऑफ कंटेंट दैट यू हैव टू सिलेक्ट। एक ग्रुप को हम कन्वेंशनल मेथड में पढ़ाएंगे, लेक्चर मेथड में, ट्रेडिशनल मेथड में, दूसरा ग्रुप को बाय यूजिंग द मूक्स, मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज या वीआर ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, जो या ब्लेंडेड लर्निंग अप्रोच, जो आपका इच्छा, ठीक है। देन फर्दर डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, इनका जो रिजल्ट आपको मिलेगा, जो अचीवमेंट स्कोर, द परफॉर्मेंस स्कोर्स मिलेगा, दैट इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। देन टेस्ट ओनली पोस्ट टेस्ट, सिर्फ एक ही टेस्ट आप करेंगे, पहले ट्रीटमेंट आप देंगे, एक को कंट्रोल ग्रुप को एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को, एक को मूक्स में, एक को कन्वेंशनल मेथड में, कोई प्री टेस्ट नहीं करेंगे, बट रैंडमाइज्ड करके सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है। पोस्ट टेस्ट आप करेंगे दोनों ग्रुप का। देन व्हाट यू हैव टू कंपेयर द पोस्ट टेस्ट रिजल्ट। सो हियर थ्रेट इज नो प्री टेस्ट, नो मैचिंग ऑफ द सब्जेक्ट। हम रैंडमाइज तो किया, पर रैंडमाइजेशन इज नॉट द एग्जैक्टली यू कैन नॉट फॉर्म 2 पैरेलल ग्रुप, 2 इक्विवेलेंट ग्रुप, तो आपको मैचिंग करना पड़ेगा, बट यहां हमने मैचिंग किया ही नहीं, सिर्फ रैंडमाइज किया। सो प्री टेस्ट मैंने नहीं किया, मैचिंग भी नहीं किया, मतलब कहीं ना कहीं हम यहाँ एरर को स्पेस दिए, एरर को जगह दिए, ठीक है। तो इसीलिए I can say that this is, though it is a true experimental design, still then I can say that this is a good design. So suggestion is, this can be used for the children of lower classes where there is no possibility of taking a pre-test.
छोटे बच्चे जहां होते हैं, जहां प्री टेस्ट करने का पॉसिबिलिटी नहीं आता, तो इस प्रकार का स्टडी आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिजाइन फॉर अंडर ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, 2 ग्रुप्स रैंडमाइज्ड मैच्ड सब्जेक्ट्स पोस्ट टेस्ट ओनली डिजाइन। इसका मतलब देखिए, दो ग्रुप रहेगा, रैंडमाइज्ड करेंगे और मैचिंग भी करेंगे, ठीक है, बट प्री टेस्ट नहीं रहेगा। मतलब एक एरर हमने यहां किया, स्पेस दिया, हम प्री टेस्ट नहीं किया, ठीक है। सो कंपैरिजन हम फिर कर नहीं पाएंगे, पहले स्कोर क्या था, बाद में क्या हुआ, चेंजेस हुआ कि नहीं हुआ, सिर्फ पोस्ट टेस्ट को लेकर हमने कंपेयर करेंगे। सो ग्रुप विल बी 2, one will be the experimental and other will be the control. Then second, group formation through randomization and matching। आपको मैंने बताया रेंडोमाइजेशन आप करेंगे और मैचिंग भी करेंगे, दो सब्जेक्ट को लेकर आफ्टर रेंडोमाइजेशन जो इक्वल नेचर की है, जो इक्वल अचीवमेंट स्कोर की है, इक्वल परसेंटाइल की है, उनको एक को एक ग्रुप में और एक को दूसरे ग्रुप में आप रखेंगे। आप यहां किया, अच्छी बात है। प्री टेस्ट कोर्स फॉर मैचिंग पर्पज, जब मैचिंग आप करेंगे तो अब एक प्री टेस्ट स्कोर लेंगे, बट ये प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट के साथ कंपेयर नहीं होगा, ठीक है। मैचिंग करने के लिए प्री टेस्ट स्कोर आप देख सकते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 रहेगा, वही सेम एग्जांपल, एक को मुक्स ट्रीटमेंट देंगे और एक को कन्वेंशनल मेथड में पढ़ाएंगे। डिपेंडेंट वेरिएबल अचीवमेंट टेस्ट स्कोर्स रहेगा, टेस्ट पोस्ट टेस्ट मीन स्कोर रहेगा और ऑन एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप के ऊपर होगा। डिसीजन रिजल्ट को आप कंपेयर करेंगे, पोस्ट टेस्ट का रिजल्ट एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का और कंट्रोल ग्रुप का, जो दोनों मेथड में आपने ट्रीट किया। इसका थ्रेट है प्री टेस्ट आपने नहीं किया। देन डिफिकल्टी इन प्रॉपर मैचिंग। सो मेनी टाइम जब मैचिंग हम करते हैं तब भी कुछ डिफिकल्टीज आता है, एग्जैक्टली 2 मैच्ड सब्जेक्ट हमें नहीं मिलता ताकि हम एग्जैक्ट 2 ग्रुप फॉर्म कर लें, तो ये तो किसी भी स्टडी में एक एरर रहता है, बट यहाँ प्री टेस्ट हमने नहीं किया, ये एक एरर है। सजेशन है, दिस कैन बी यूज्ड व्हेन नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर वेरी लेस बिकॉज ऑफ मैचिंग, ठीक है। जब चिल्ड्रन बहुत कम रहते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर वेरी लेस, तो इस प्रकार का एक्सपेरिमेंटल मेथड और डिजाइन दैट यू कैन सिलेक्ट। चलिए नेक्स्ट डिजाइन, दैट्स कॉल्ड एज रेंडमाइज्ड ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन। यहां रेंडमाइज्ड करेंगे पर मैचिंग नहीं करेंगे। देखिए जो टर्म जो यूज किया गया, रेंडमाइज्ड ग्रुप्स प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन, दोनों प्री टेस्ट भी हम करेंगे, पोस्ट टेस्ट करेंगे, पर मैचिंग नहीं करेंगे। सो ग्रुप्स विल बी 2, एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल। देन ग्रुप्स फॉर्मेशन थ्रू रेंडमाइजेशन, मैचिंग नहीं है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल टीचिंग थ्रू मूक्स, देन टीचिंग थ्रू कन्वेंशनल मेथड, मूक्स टू ग्रुप एंड to the conventional method to the control group. Then dependent variable achievement test score रहेगा। प्री टेस्ट हम पहले करेंगे, प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट मीन स्कोर्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप, दोनों ग्रुप का प्री टेस्ट होगा एंड पोस्ट टेस्ट होगा। सो यू विल गेट 2 sets of scores now. In control group you have a set of pre test score and also in control group you have a set of post test score. Again इन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप यू हैव ऑल्सो 2 sets ऑफ स्कोर्स। तो आप क्या करेंगे, दोनों को आप कंपेयर करेंगे, प्री टेस्ट के साथ पोस्ट टेस्ट एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का, प्री टेस्ट के साथ पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप का। और फर्दर आप क्या कर सकते हैं, पोस्ट टेस्ट एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का एंड कंट्रोल ग्रुप का, ये आप कर सकते हैं कितने चेंजेस आया, ठीक है। तो ये 4 वेज यहां ANOVA यूज करके आप अपना जो डिफरेंस है, डिफरेंस आपका प्री टेस्ट से पोस्ट टेस्ट, पोस्ट टेस्ट से पोस्ट टेस्ट, ठीक है, कंट्रोल टू एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल टू कंट्रोल, दैट यू कैन डू। डिसीजन एंड रिजल्ट, कंपेयर द डिफरेंस बिटवीन द मीन स्कोर्स ऑफ प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट रिजल्ट्स ऑफ बोथ द ग्रुप्स एंड आल्सो टू कंपेयर डिफरेंस बिटवीन द मीन स्कोर्स ऑफ बोथ द ग्रुप्स, दोनों ग्रुप का डिफरेंस और एक ही ग्रुप का प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट के बीच में डिफरेंस आप स्टडी कर पाएंगे। बट हम मैचिंग यहां नहीं किया, एक थ्रेट यहां हम स्पेस दिया। सजेशन इज ए हाईली यूज्ड मेथड, ये मेथड हमने यूज करते हैं। The next we will discuss quasi-experimental design. Friends, quasi-experimental design, it says that many a time it is not possible to do the randomization for forming the groups or to do a type of matching for forming 2 equal groups. So for that there is the scope for conducting research by using the quasi-experimental design.
Here you see true experimental design brings control in terms of randomization and matching, history and maturation, measuring instrument testing. We have already discussed that it is possible only in the true experimental design. ठीक है, हम randomization करते हैं, मैचिंग करते हैं, हिस्ट्री मैचुरेशन देखते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को स्टैंडर्डाइज करते हैं और टेस्टिंग भी करते हैं. ठीक है, but many a time it is not possible for the part of the experimenter to assign groups and subjects randomly and with carefully matching. हम उसे मैचिंग कर नहीं पा रहे हैं, carefully randomization भी नहीं कर पा रहे हैं. When the researcher make groups from different sections of a same class, जिस क्लास में let you are a teacher, to the students to whom you are teaching, let 5 सेक्शन है, 4 सेक्शन है क्लास में. आप एक को आप कहेंगे पहले एक रेंडमाइज करके ग्रुप सिलेक्ट करेंगे, एक ग्रुप को कंट्रोल ग्रुप में रखेंगे, कुछ सब्जेक्ट को एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में रखेंगे. आप देखेंगे एक कॉम्प्लेक्सिटी डेवलप होगा, एक टाइप ऑफ इंफीरियरिटी और सुपीरियरिटी भाव का विकास होगा. जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में रहेंगे शायद उनका फीलिंग होगा हम एक अच्छा ग्रुप है, बेहतर ग्रुप है. जो कंट्रोल ग्रुप में रहेंगे शायद एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उनके बीच में हो. और फर्दर क्या होगा, एक सेक्शन से कुछ स्टूडेंट्स को आपने ले लिया आपके एक्सपेरिमेंटल स्टडी के लिए और कुछ स्टूडेंट को आप छोड़ दिए. ठीक है, टेस्ट किया, टेस्ट करके एक ग्रुप को लिया और कुछ स्टूडेंट्स को लिया और कुछ स्टूडेंट्स को छोड़ दिया. इसका मतलब क्या है, यहां भी एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी आ रहा है. सो पर्टिकुलरली व्हेन यू आर गोइंग टू कंडक्ट ए स्टडी, taking the students to whom directly you are dealing, that means to whom you are teaching in your class, in your section. So better to take the entire section for not giving such type of scope, such type of space for inferiority complex or superiority complex. So that's why without a randomization, without a matching, you can also conduct a study. So friends, that's called as quasi-experimental research. So चलिए समझने के लिए कोशिश करते हैं कि क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या क्या डिजाइन आप यूज करते हैं. ठीक है, 2 डिजाइन इसमें आप यूज कर सकते हैं. वन इज नॉन रेंडमाइज्ड कंट्रोल ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन. नॉन रेंडमाइज्ड, हम रेंडमाइज नहीं करेंगे, ओनली कंट्रोल ग्रुप रहेगा, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप नहीं रहेगा, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन. ठीक है, एंड फर्दर इज काउंटर बैलेंस डिजाइन. काउंटर बैलेंस डिजाइन क्या है, चलिए आगे समझते हैं. First we'll discuss the non-randomized control group pre-test post-test design. Here you see control group means experimental group भी रहेगा, साथ साथ में control group भी रहेगा. This is not one group design, right? So control group means here experimental as well as control, दोनों group इसमें रहेंगे. Group will be 2. Group formation, students of entire section of class from a school, pre-assembled groups that you can say without doing any randomization, equal mean and standard deviation of the groups by taking pre-test. एक pre-test आप लेंगे, लेकर mean standard deviation more or less same जिसका हो रहा है आप सेक्शन को लेंगे और कोशिश करेंगे कि जो सेक्शन है एंटर सेक्शन को आप लेंगे. एक सेक्शन से कुछ स्टूडेंट को छोड़ दिया क्योंकि आप रेंडमाइज नहीं कर रहे हैं, आप मैचिंग नहीं कर रहे हैं. सो दैट्स एंटर सेक्शन स्टूडेंट्स को आप ले सकते हैं. देन अगेन 2 वेरिएबल्स टीचिंग थ्रू मूक्स, जिसको एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में आप ये ट्रीटमेंट देंगे और कंट्रोल ग्रुप को कन्वेंशनल मेथड में ट्रीटमेंट देंगे. एक पोर्शन ऑफ कंटेंट आप सिलेक्ट करेंगे. ठीक है, एक डिजाइन करेंगे, मूक्स उसका डिजाइन करेंगे जिसमें ऑडियो होगा, जिसमें वीडियो होगा, जिसमें डिस्कशन होगा. ठीक है, और जिसमें असेसमेंट होगा. एवरीथिंग विल बी डन ऑनलाइन, बट इन कन्वेंशनल मेथड जैसे आप हर दिन पढ़ाते हैं वैसे ही आप करेंगे. फर्दर डिपेंडेंट वेरिएबल अचीवमेंट टेस्ट स्कोर्स. ठीक है, तो यहां आप क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करने के बाद, ट्रीटमेंट देने के बाद, यू हैव टू टेक द टेस्ट, यू हैव टू एडमिनिस्टर द टेस्ट. ठीक है, देन फर्दर प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट मीन स्कोर्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप विल बी टेकन. प्री टेस्ट आपने पहले किया है, देन पोस्ट टेस्ट आप करेंगे. सो दोनों ग्रुप का आप कंपेयर यहां करेंगे. ठीक है, पर रेंडमाइज नहीं किया, मैचिंग नहीं किया. और बाकी जैसे अर्लियर ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में हमने डिस्कशन किया था एग्जैक्टली वही सेम है. बट इसका जो थ्रेट है, नो रेंडमाइजेशन, मैचिंग हमने नहीं किया. डिफिकल्ट टू गेट इक्वल मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ग्रुप्स बाय यूजिंग प्री टेस्ट. हमने प्री टेस्ट किया. हाउ कैन यू से दैट
from your pre-test you will get the equal score. How can you form the group? There is not possible to get the exact mean and the standard deviation. So this is the threat here. सजेशन में यहाँ आप देखिए कैन बी यूज्ड इन द स्कूल सिचुएशन, सो दैट वी कैन यूज एक अप्लाइड रिसर्च हम स्कूल में कर रहे हैं, एक एक्शन रिसर्च हम स्कूल में कर रहे हैं, तो इस प्रकार का डिजाइन हम ले सकते हैं, दोनों सेक्शन को सिलेक्ट करके ले सकते हैं, ठीक है. दिस इज स्पेसिफिकली टू द यूज इन द स्कूल्स ओनली, ठीक है, टू हुम यू आर टीचिंग. Then the last design of quasi-experimental, that's called as the counterbalance design. ये term use किया गया है counterbalance design. So try to understand that what is counterbalance design. So here you see group, there will be two group, both the groups will be given rotation wise treatment. दो group आप करेंगे पर दोनों को rotation wise treatment देंगे. Means दो experiment आप करेंगे, पहले जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हुआ है सेकेंड ट्रीटमेंट उनको कंट्रोल ग्रुप माना जाएगा और कंट्रोल ग्रुप का ट्रीटमेंट दिया जाएगा, ठीक है. और पहले जिसको कंट्रोल ग्रुप का ट्रीटमेंट दिया गया है काउंटर बैलेंस के लिए उनको एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट दिया जाएगा. डिस्कशन करेंगे आगे ये कैसे है. ग्रुप फॉर्मेशन, स्टूडेंट्स ऑफ एंटायर सेक्शन ऑफ क्लास फ्रॉम ए स्कूल, एक स्कूल का एंटायर सेक्शन को आप ले लेंगे, प्री असेंबल्ड ग्रुप्स विदाउट डूइंग एनी रैंडमाइजेशन, इक्वल मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन लेने के लिए आप कोशिश करेंगे, बट नॉट नेसेसरली कि पूरा इक्वल आपको मिल जाए. इंडिपेंडेंट वेरिएबल वन, जैसे कि दो कंटेंट आपके पास है, एक यूनिट 1 है और एक यूनिट 2 है. यू वांट टू नो द इफेक्टिवनेस ऑफ द कंटेंट बाय यूजिंग द मेथड, ठीक है. तो पहला आप यूनिट 1 लिया जिसको आप मुक्स में पढ़ाया फर्स्ट ग्रुप को, ठीक है, दैट्स कॉल्ड एज द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप. सेकेंड ग्रुप आप जो सेकेंड ग्रुप एक आपने लिया जो कन्वेंशनल ग्रुप है, जो कंट्रोल ग्रुप है, उनको भी यूनिट 1 आप पढ़ाएंगे कन्वेंशनल मेथड में. देन फर्दर फिर रोटेशन आप कर देंगे, यूनिट 2 को आप आ जाएंगे. यूनिट 2 जब 1 जब कंप्लीट हो गया देन यू विल कम टू यूनिट 2. ओके, यूनिट 2 में जो कन्वेंशनल ग्रुप था, ठीक है, कन्वेंशनल ग्रुप जो था टीचिंग थ्रू मूक्स, ये ग्रुप 2 को देंगे, ग्रुप 1 को नहीं देंगे, ठीक है. वेरिएबल 1 जो है ये ग्रुप 2 को देंगे, जो पहले ग्रुप 2 को कन्वेंशनल में पढ़ाए थे, अभी यूनिट 2 उनको मूक्स यूज करके पढ़ाएंगे. सेकेंड यूनिट 2 ग्रुप 1 को ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट देंगे. इधर ग्रुप 1 को यूनिट 1 में आप मूक्स में पढ़ाया था, मूक्स ट्रीटमेंट दिया था, बट हियर व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गिव द कन्वेंशनल ट्रीटमेंट. रोटेशन आप कर दिए जस्ट टू काउंटर द बैलेंस. हमेशा क्यों एक कंट्रोलर एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हो, ठीक है. सो व्हाई नॉट टू रोटेट टू गेट द रियल रिजल्ट. सो डिपेंडेंट वेरिएबल अचीवमेंट टेस्ट स्कोर्स ऑफ मूक्स एंड कन्वेंशनल मेथड, दोनों मेथड का जो अचीवमेंट स्कोर है ये आप लेंगे इन बोथ द एक्सपेरिमेंट्स. तो हियर पोस्ट टेस्ट कंबाइन मीन स्कोर्स ऑफ मूक्स एंड कन्वेंशनल मेथड. तो यहाँ प्री टेस्ट कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ पोस्ट टेस्ट लेंगे. पोस्ट टेस्ट लेकर मूक्स एंड कन्वेंशनल मेथड में जो ग्रुप सिलेक्ट किए उनको आप कंपेयर, उनका रिजल्ट को कंपेयर करेंगे. डिसीजन कंपेयर द पोस्ट टेस्ट रिजल्ट्स ऑफ बोथ द मेथड्स, दोनों मेथड को आप इसमें यूज करेंगे. और एट द सेम टाइम कंटेंट जो लिया है, कंटेंट का क्वालिटी भी आप यहाँ जान सकते हैं बाय यूजिंग द काउंटर बैलेंस डिजाइन, ठीक है. देन फर्दर threat is here making two equivalent learning material. It's not possible. Learning material हमने यूनिट 1 and यूनिट 2 बनाया. It's not possible to exact difficulty value का दो कंटेंट हमने बना ले. देन रिपीटेड टेस्टिंग हमने यहाँ कर रहे हैं. कैरी ओवर इफेक्ट भी रह रहा है प्री टेस्ट से पोस्ट टेस्ट को, ठीक है. तो ये सब एरर इसमें रहता है. सो काउंटर बैलेंस में ये एरर रहता है. बट सजेशन रोटेशन ऑफ ग्रुप्स एलिमिनेट ग्रुप डिफरेंसेस एंड एरर्स. सो ग्रुप डिफरेंस एंड एरर्स जो है ये मिनिमाइज हो जाता है. सो फ्रेंड्स टुडे वी डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड, ठीक है. कंट्रोल क्या है, डिफरेंट टर्म्स दैट वी यूज इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. इट मे बी डिपेंडेंट वेरिएबल, इट मे बी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इट मे बी control group, it may be experimental group, ठीक है. it may be history, it may be maturation, it may be pre-test, it may be post-test, it may be experimenter, it may be subject, ठीक है. then how to do the control,
how to randomize, how to form the groups, how to do the matching, and how to prepare, how to make two equivalent group, two parallel group. Okay, similar in all the you can say in all respects, so that we can find out the real effect. Then further we discussed about the particular design that we can use. We discussed the pre-experimental design, we discussed the true experimental design, at the same time we also discussed the quasi-experimental design. Then further the time series design and factorial design, that I am not, because of the paucity of the time, I am not discussing, समय नहीं है, मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ. बट टाइम सीरीज डिजाइन में पैरेलल यू कैन से एक्सपेरिमेंट हमने कर सकते हैं. ठीक है, डिफरेंट पैरेलल एक्सपेरिमेंट करके डिफरेंट टाइम हम देख सकते हैं इसका इफेक्ट क्या है. आई विल ट्राई टू टेक अनदर सेशन टू डिस्कस. Then factorial design to find out the factors. So what are the different factors? We can just analyze the factor loading. ठीक है, अचीवमेंट के ऊपर या आपका परफॉर्मेंस के ऊपर, डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर क्या क्या सो फैक्टर्स है. सो बाय डूइंग ए प्रॉपर factorial design, by doing a type of research, we can also analyze the factor. That is also called as factor analysis. So कौन सा फैक्टर का लोडिंग कितना है, ठीक है, परफॉर्मेंस के ऊपर, that also we can do by using the factorial design in experimental research. So that we can discuss in another session. So friends, for further queries, you can write a mail to me, niradhar@igno.ac.in. You can also make me a telephone call. At present, I am not available, but when I come to my office, my intercom is 2994. You can also make me a call. And you can visit my Facebook channel, my Facebook page, my YouTube channel, and my Twitter handle. You will find more than 200 of useful video programs, video lessons relating to research, relating to other areas of your program. Okay, program in education that you are pursuing. It may be B.Ed, it may be MA education, it may be BA education, it may be research. Okay, so you can just take the benefits of it. So friends, thank you all of you. We'll meet in any other session in future. Thank you.